Why IPMAT Indore cutoff is so low? ये टॉपिक जब भी मेरे दिमाग में आया लगा कि इस पे वीडियो बनाना ही नहीं चाहिए इनफैक्ट, बट न जाने क्यों जब भी हम लोग वेबिनार्स ले रहे थे तब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जरूर पूछते थे। एंड एक ऑब्जर्वेशन थी, जब जब हमने इन स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर दिया, दे कुड कनेक्ट विद द एग्जाम इन अ बेटर वे। जो उनकी प्रिपरेशन चल रही थी पहली, उनकी स्ट्रैटेजीज चेंज हो जाती थी। तो शायद मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो जरूर आप सबके सामने लेके आना चाहिए, बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ गाइड फॉर यू ऑल कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज कैसी होनी चाहिए। ट्रस्ट मी, ये 2-3 मिनट का या 4 मिनट का वीडियो है, लेकिन ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज को चेंज कर देगा। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू रियली वेरी हार्ड एंड आप आईपीएम को बहुत अच्छी तरीके से समझना चालू कर दोगे। सो डोंट मिस अ मिनट ऑफ इट, स्टिक टिल द एंड। बेसिकली ये क्वेश्चन उठता कहां से है? Why IPMAT Indore एग्जाम कट ऑफ्स आर सो लो? बेसिकली जितने स्टूडेंट्स हैं वो 11th एंड 12th में पढ़ रहे हैं आज के टाइम पर, एंड दे कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड एंड स्टार्ट स्टडिंग फॉर आईपीएम एग्जामिनेशन। तो उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बोर्ड प्रिपरेशंस एंड आईपीएम प्रिपरेशंस बिल्कुल सेम होने वाली है, क्योंकि उन्होंने उसी टाइप की स्टडी की हुई होती है शुरुआत से। नाउ trust me on this particular part, there is a strong difference between your board preparations and IPM preparations. इसका सबसे पहला रीजन ये है कि आप बोर्ड के एग्जाम में या फिर 11th के एग्जाम में सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखना चाहते हो, लेकिन आईपीएम के एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना अनिवार्य नहीं है। इट्स नॉट कंपल्सरी। सेकंड रीजन बीइंग कि आप आईपीएम की जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड ऑल द एग्जामिनेशंस आर वेरिंग इन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी। सो IPMAT Indore is tougher than IPMAT Rohtak, which is usually tougher than JIPMAT. हो सकता है कि IPMAT Rohtak कभी easy भी हो जाए JIPMAT से, but there is a varying level of difficulty. So that clearly proves that IPMAT Indore is a very very difficult examination. Thirdly, आप बोर्ड्स में जो पढ़ के जाते हो वो आप क्रैम करके उस पर्टिकुलर डे पे, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, वॉमिट आउट करते हो। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट आईपीएम एग्जाम प्रिपरेशंस, it is not the case. There is a lot of practice, there is a lot of comprehension, there is a lot of back-end work that's involved over there, and trust me, if you are going completely unprepared, then at that point of time, there is nothing that can help you in the examination time. I think it would be very easy for you to understand this, that a paper that's having very high level of difficulty, it would be difficult for a maker to ask a question that's direct in nature. So relatively very few direct questions would be asked in an examination like IPMAT Indore. अब मेजरली IPMAT Indore में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कैसे रहेंगे? इनडायरेक्ट रहेंगे। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस किस टाइप के हो सकते हैं? इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कैन बी, नंबर 1, mixed bag of different concepts in one question. Number 2, some tougher concepts being actually asked in one question. Number 3, a rationale or an application-based question being asked from you. Number 4, concepts deliberately tweaked or twisted to check your awareness and agility. So tackling 11th and 12th and tackling IPM becomes a completely different story altogether, क्योंकि यहाँ पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस काफी टफ है, एंड यहाँ पर आप सीक्वेंस में अगर आप चले like your board examinations, then it's going to be very difficult for you to clear the IPM examination. So an intelligent person is not someone who is answering every question in an IPMAT examination, but in board examination, an intelligent student is going to solve every question. That's the major difference between these two kind of examination. लेकिन आपकी साइकी बैठी हुई है बोर्ड एग्जामिनेशन पे, IPMAT को समझने का तरीका अलग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन और एक इजी क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको सेम मार्क्स देने वाले। सो trust me, if you are actually fighting with a difficult question and then getting an answer, versus if you're solving 2 or 3 questions, 2 or 3 easier questions in same point of time, it's always going to give you higher rewards. So yes, I agree that you need to score really very higher than the cutoffs, but base तो cutoff ही है ना बॉस, इंटरव्यू कॉल तो cutoff पे ही आएगा ना, जिसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते एंड दे सॉल्व इन सीक्वेंस एंड कट ऑफ स्कोर्स रियली वेरी लो। सो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसे चेंज करनी है? प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ऐसे चेंज करनी है कि सो इन बोर्ड एग्जाम्स स्टूडेंट्स कवरिंग द मोस्ट सिलेबस स्कोर बेटर, whereas in IPM those who master topics in depth are the ones who actually succeed. To conclude, finally, 2 things matter in IPM, and both of them are dependent on each other. Number 1,
You need to choose the right set of questions in examination and shoot them. If you're able to do that, trust me, you can score really very well than someone who is actually struggling with every question. But this is dependent on something that's very, very, very important, and that is understanding concepts at depth, doing a lot of practice on those concepts, and finally solving interesting set of questions that challenge you at every level. Just ask from yourself, are you actually solving the questions that are challenging you at every moment? If you're doing it, then you're at the right stage. If you aren't, then change your preparation plans. This was all from my side. I hope this particular video would be useful for you all. Hit the like button right now. Subscribe Supergrads YouTube channel if you have come for the very first time, and share the set of topics on which we should be coming up with the new videos on. And one more thing, you can add your opinions in the comment sections below. That's all from my side. I'm Rahul Sir, now signing off from this particular video. Bye-bye.